Hello everyone, I'm Anjali and welcome back to my channel Wonder with Jelly and I hope you all are doing very well. So festive season आने ही वाले हैं and we all are really excited to decorate our homes. So इस Navratri के लिए I was really excited to decorate the diyas and all. I wanted to use something that is related to Gujarat culture and the best thing that came out is mirror. So definitely I'm gonna use mirror in this DIY, but one thing that I also use in this DIY that changed the whole look of the DIY, so that I'm gonna tell you in the last of the video, so make sure you watch the video till last. So now let's get started with the video, but before that make sure you hit the subscribe button and give this video a like and share this video with your friends and family. Now let's get started. Alright, let's get started. So firstly we would need these kinds of DVDs. Make sure कि आप DVDs लो, CDs ना लो. CDs अलग नहीं होती हैं and DVDs separate हो जाती हैं. So now I'll take a bowl of warm water and उसमें मैं ये CDs डाल दूँगी for at least 15 minutes and I'll keep it aside. And meanwhile, I'll take this diya and I'm going to decorate it with different colors. So I'm using red and you can use any colors of your choice. So I'm gonna pour it and मैं इसको अच्छे से पेंट करूँगी दिए को. So दिए को मैंने डेकोरेट करने से पहले इसको पानी में भिगो के रख लिया था for at least 10 to 15 minutes. So दोनों दिए को पेंट करने के बाद मैंने एटलीस्ट 10 to 20 मिनट्स के लिए इनको धूप में रख दिया था सूखने के लिए. एंड जब ये अच्छे से सूख जाए यू कैन ऐड एनी रैंडम डिज़ाइन ऑफ योर चॉइस. मैंने रैंडमली डिज़ाइन यहाँ पे ऐड किया है विद येलो कलर. You can choose any pattern that you like. You can decorate this diya with mirrors and different materials as well. So this is how our final diya looks and इसको मैंने अच्छे से decorate कर दिया है with a single color. If you want you can add any colors of your choice. So it's been a while and अब हमारी CDs भी अच्छे से सोक हो चुकी हैं and अब मैं इसमें से एक CD निकालूंगी and एक एक करके इनको एक कॉटन टॉवल से वाइप करूंगी. Once that's done, I'm gonna take a sharp knife and इस sharp knife की हेल्प से मैं ऐसे CD के बीच में इसको डालूंगी and ऐसे घुमाऊंगी और ये बहुत स्मूथली अलग हो जाएगा. Just look at it how easily it's gets separated. एंड ये जो शाइनी पार्ट है इसको हम नेक्स्ट DIY में यूज़ कर सकते हैं, बट फॉर दिस वी गोना यूज़ दिस पार्ट ऑफ द CD. एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ अ स्पॉन्ज मैं वही सेम एक्रेलिक कलर को CD पे अप्लाई करूँगी एंड मैं सिर्फ डैप कर रही हूँ यहाँ पे. एंड डैप करते करते वो बहुत अच्छा टेक्सचर भी दे रहा है और काफ़ी अच्छे से कलर को स्प्रेड भी कर रहा है. इन सीरीज़ के भी कितने वेरिएंट DIYs बन सकते हैं. एंड टू वॉच मोर सच DIYs you can click on this I button to check my previous DIY using this series. So our base is ready and इसके बीच की ये जगह मैं छोड़ दूँगी क्योंकि यहाँ पे दिया आएगा एंड उसके अराउंड मैं इसको डेकोरेट करना स्टार्ट करूँगी. सो मैं पहले फेविकॉल लगा लेती हूँ और उसके बाद धीरे धीरे करके बीड्स या मिरर्स ऐड करती हूँ. इफ़ यू वांट तो आप बीड पे ही फेविकॉल लगा के एक एक करके आप ऐड कर सकते हो, बट वो मुझे बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगता है तो मैं ऐसे यूज़ करती हूँ इसको. सो इसके सेंटर में तो मैंने मिरर एंड स्टोन ऐड कर दिए हैं. नाउ इट्स टाइम फॉर एजेस एंड एजेस पे जो मैं स्टोन यूज़ करने वाली हूँ वो काफ़ी टाइनी है एंड इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ माई पेशेंस, बट दिस इज़ व्हाट DIYs डज डू. सो दिस इज़ ऑलमोस्ट रेडी बट मुझे बीच में काफ़ी स्पेस खाली लग रहा था, सो आई एम गोना ऐड फ्यू मोर मिरर्स टू इट. So our base is done. We just have to add the diya. So this is how our final diya looks.
Thanks for watching, guys. I hope you love these DIYs, and this was the one that I loved. But so the most that I loved was this one, this pom-pom one. It got my heart. I never thought that I'm gonna use these kind of pom-pom to make my craft look more quirky and cool, but I'm really happy with the results. So इस DIY के लिए you have to follow me on Instagram as well, because इसका DIY मैंने वहाँ upload किया है. And make sure you subscribe to my channel for more such videos, because बहुत सारी videos आने वाली है for Diwali, and I'm really excited. So see you in the next video, guys. Till then, subscribe to my channel and hit that bell icon and share this video with your friends and family. Bye bye.